The way I do it is a bit different. What I do is I on the right, on the affected side for 3 minutes with a timer, and then 3 minutes on the left and 3 minutes on the, and I've got like more than 95% results. I've got very happy patients. So I mean, the idea is the patient should be treated, and we all have our own. But it would be nice to see how Mujib does his own. Okay, मेरा procedure ज़रा लंबा है, but I will make it short. Short I will make it short. Okay, so we lay down the paper. आपको दोबारा उस पोजीशन में लेटाना है. अगर चक्कर आए तो घबराना नहीं, आंखें बंद नहीं करनी है, ठीक है? आप आ जाइए, पीछे आ जाएं, आ जाएं, पीछे आ जाएं, बिल्कुल घबराना नहीं है. आंखें खोल के रखें, शाबाश. Why should he open the eyes? खोल के रखें, शाबाश. Nystagmus already diagnosed कर लिया ना. So during the procedure, should we also patient open the eyes or to see how long it? ओके, ढीला रखो बेटा, सर को ढीला रखो जरा, ऐसे. ओके, मैं क्या करता हूँ, अगर थोड़ी सी और ऊंची हो ना तो नहीं, इसके ऊपर मुझे बिठा दे. सो मैं ये करता हूँ. ओके, अब बेटा इधर सर रख लो. ओके, सो the patient's head should be comfortable, like he is sitting, resting his head on the pillow. Okay, आंखें खोल लो बेटे. खोलने से चक्कर आता है? हाँ जी. खोलने से चक्कर आता है, बंद करने से नहीं आता? या? खत्म हो गया या नहीं हुआ? When you ask the patient to focus at me, उसको हम help कर रहे हैं to minimize the nystagmus, to minimize the feeling of dizziness. ठीक है? खत्म हो गया या नहीं हुआ? खत्म हो गया? Okay, now from this position, ये आप maximum तकरीबन आप right side पे इसको turn कर लें, which will be about 120 degrees or so, and then चक्कर आ रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, रुके रखो इधर. Sometimes there can be vertebrobasilar insufficiency, which can be responsible for dizziness. So उसका भी आपको ख्याल रखना है. And कभी कभार आपको 4 vessel Doppler करवानी पड़ती है, just to rule out that this is not the issue. जब खत्म हो जाए तो बता देना. So do you record the time? I mean, how long does the nystagmus stay there? Like, do you record that time? Yeah, Because yeah. I've seen in one center what they did was they took them down and they noted the time. And when the nystagmus is, I don't record it. you don't record I the don't time, record, right? but I make sure that the nystagmus completely disappears, And then you start the patient's feeling of dizziness completely disappears before I start the maneuver. So what do you do in patients with neck, stiff neck? I mean, I come across many patients who have got a stiff neck. Yeah. So do you use pillows or, I use pillows and, Pillows on the sides? yeah, I mean, because you cannot turn to the right side. Right. It's just like this, you know. हाँ. So I mean, अच्छा, उसमें जो what I do, some patients they actually have the spine issue, while other patients they The are stiff just neck, fear of, they have a fear of moving and they, causing. they are very patient, they cannot वो even, होते ही बिल्कुल. हाँ, तो उनमें हाँ जी, यू आर ओके. अच्छा जी. तो वेल एक्चुअली वो मेरे पास somehow बड़े कम आए इस तरह के. But obviously if they are suffering from BPPV, then you have to be, you have to make the patient comfortable. Okay, so जो है ना सर, उसका हेड थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो मैं फिर खुद से जैसे सर ने पकड़ा है वो उसी पे उसी में ही हो हाँ जाता थोड़ा सा हो जाता है. हाँ तो खुद हाँ से मैं वो करता नहीं तो यही हूँ, मुझे थोड़ा सा पिलोस डाउन की हो जरूरत जाएगा. नहीं पड़ती है. पिलोस की जरूरत नहीं पड़ती. मेरे वो टेबल के साथ वो हेडरेस्ट बना हुआ है, उसको हम ऊपर ही रख लेते हैं. थोड़ा सा डाउन करता हाँ. है. Okay, so this is still not in the ideal head position, ठीक है? But from here, what I will do is I will start tapping this mastoid with 4 fingers like this, ठीक है? And slowly and gradually, बेटा आपका मैं आहिस्ता आहिस्ता सर इस तरफ घुमाऊंगा, ठीक है? Slowly and gradually
I'll keep turning the head to the other side. सर आप वाइब्रेटर भी यूज़ करते हैं? हाँ, वो मैं भी यूज़ करता हूँ क्लिनिक में. आई डू. हमारा जो पेपर है, नजम साहब भी मेरे साथ थे उस पेपर में, तो उस पेपर के अंदर हमने वाइब्रेटर यूज़ किया है. और जिन पेशेंट्स ने हमने वाइब्रेटर यूज़ नहीं किया उनमें सक्सेस रेट वाज अ लिटिल लो. अच्छा, अगर चक्कर आए तो आपने बता देना, ठीक है असलम जी. अब अगर आपको चक्कर आए तो आपने बता देना, ओके. जो ओरिजिनल एप्लीका मनोवर है ना, उसके अंदर ही रिकमेंडेड दैट द पेशेंट मस्ट नॉट लाई ऑन द साइड फॉर एटलीस्ट 3 days, ठीक है. वो उसको मना करता है, आपने उस साइड पे नहीं लेटना, ओरिजिनल. लेकिन उसके बाद बहुत सारी वेरिएशंस आई. जो मेरी वेरिएशन थी हमारी, चक्कर आया, okay, stop. So if the patient, the moment the patient feels dizzy, I go back a little and then restart. अब तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है. जैसे जियान ने कहा था कि when the patient sits and he has nystagmus, could it be superior semicircular canal? I know it's very rare, Yeah, it can be, but it could be. but it could be superior semicircular canal. Yeah, it can be superior semicircular canal, but the maneuver is the same. Maneuver is the same. Maneuver is the same. The same, Same. even for superior semicircular. Even for superior. So for only for the horizontal, it's a Horizontal is particular different. or Yes. Horizontal is different. चक्कर आ रहा है? हाँ? पोस्टीरियर कोप्लेनर है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट. हाँ, बिल्कुल. लेकिन अब तो नहीं, तो ऊपर अब पड़ेगा. ठीक हो? रन करने लगे मैं देने लगा Okay. टिल के वर्टिगो डिसअपीयर तब तक आप करें. नहीं, आप टैपिंग तो आपने थ्रू द प्रोसीजर करनी है, वो मैं करता हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आपने करनी है, बट देयर मैनी I don't do that. पीपल डोंट डू इट. ये भी नहीं करते, खालिद चीमा भी नहीं करते, और भी नहीं करते. लेकिन आप कुछ भी कर लें, इट रियली गिव्स यू सक्सेस, ऑनेस्टली. बट रिसेंट जो बड़े लेवल की स्टडीज़ हैं वो इसमें कोई डॉक्यूमेंट कर रही हैं कि कोई यूज़फुल नहीं होता. रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट द सेम विदाउट दैट. मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है. मेरी जो जिनमें मैं जो फेलियर हुआ है, उनमें जब मैंने वाइब्रेटर यूज़ किया तो मोर सक्सेस. अच्छा, इन सीवियर केसेस यू नो जो बिल्कुल जिनको वोमिटिंग आ रही है, normally I would give them alprazolam 0.25 milligram, ask them to wait outside for half an hour to 1 hour, Right. and then I would do the procedure. It makes a huge difference. Okay. Patient is very comfortable. It's very comfortable for the patient. Yeah. Otherwise, you know, it's very distressing. It's not a very pleasant. हाँ. अच्छा, उसमें अगर हमें पहले से पता है कि द पेशेंट हैज़ BPPV and we know that this is the right sided or the left sided, you just have to perform the maneuver. तो वो उस केस में जो है वो फिर you can even give Stamitil to control the nausea and vomiting. But alprazolam is a very good idea. वैलियम भी यूज़ होती रही है इसी काम के लिए. जी. Alprazolam. हाँ, बहरहाल. So anyway, from here, okay, if you can put some other patient instead of him, because you know, चलो, but anyway, फिर हम यूँ करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा modify कर लेते हैं इसको. So the other modification is that you move the patient without vibrations. थोड़ा सा wait करें यहाँ पर about 10-15 seconds. Go to the other side, 10-15 seconds. And then again. Right. So until और ये जो मूवमेंट है ये आपको सडन जर्क में करनी है. सडन छोटी सी मूवमेंट, 10 degrees, 15 degrees. Wait. See, I think he he's could a be test case. bilateral. I think he's got a bilateral Yeah. position of attack. Right. So, So but we need to. no, I mean, in my experience, I mean,
they all, I mean, you do one side and the other side, next time they come in, they're fine. You check, do the, आपका भी यही है गलत, एक side करो, दूसरी side बेहतर होती है. I don't know if anybody else would like to comment here. अच्छा. अच्छा, bilaterally देखिए. Okay, अच्छा, so from this position, बेटे करवट ले लो थोड़ी सी, करवट ले लो. ना आराम से आराम से आराम से आराम से थोड़ी सी करवट ले लो. So make sure, wait. Make sure कि जब ये पेशेंट करवट ले ले उसका हेड बहुत वो टर्न सडन पोजीशन ना चेंज करे. Okay, and then from here you start repeating the positions, change of position until you are about 135 degrees from the starting position. So this is about 135. Okay. From here, you keep the patient in this position for about a minute or so, and then you ask the patient to sit down with the head hanging down. Okay. And tuck into chest. Tuck into the chest. उठा दो सर. थोड़ा सा इसमें से उसको मैं थोड़ा कुछ सा फायदा भी हो जाए. ऐड ये कर देता हूँ, छोड़ना ज़रा, मैं बाजू नीचे ड्रॉप कर देता हूँ, रोटेट करने में आसानी हो जाती है. क्योंकि दोनों कंधे हों तो ज़रा मुश्किल हो जाता है. सही. तो मैं इसको फिर मैं नीचे ड्रॉप कर देता हूँ, उसमें घुमाना आसान हो जाता है ज़रा, थोड़ा सा स्टेबल भी हो जाता है. So from here, okay बेटा असलम, अब आपको ना उठ के बैठना है. एक मिनट टांगे जरा नीचे लटका लो. ऐसे अब आप उठ के बैठोगे. आप सर जरा पीछे से जरा सर नीचे रखो ऐसे. Okay. पीछे से. So from here, another 1 minute wait, and then the procedure is done. Yes. From this point on, you can just send the patient home without any. If the procedure is successful, your patient does not need any circ or any Stameter or any Stugeron. Don't give anything. Okay? जल्दी उठा लिया. ठीक हो? ठीक हो? What I do additionally, ठीक हो? is after finishing this procedure, 1 minute और wait कर लिया, I repeat the Epley's maneuver to see what is the response. So if there is complete disappearance of vertigo, I call it level 1 or grade 1, or grade 2 and then grade 3. Grade 3 is worsening. So maybe, हाँ जी कैसे हो? कुछ बेहतर लग रहा है? हाँ? Okay. So if you want, you can just test again. Fine. ठीक है? I'm sure. चलिए, thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. I have a question. ये जो अभी आपने लास्ट पॉइंट बताया, ये जरा थोड़ा सा प्लीज री-इलैबोरेट कर दें कि जब ये खत्म हो गया तो दोबारा आप कह रहे थे कि आई विल रिपीट द प्लेसमेंट.